I ask all the authorities that चलिए फोटो आ गया। I'll be ready with seconds. Good afternoon to everybody, and especially this is the last session, and I have attended most of the session personally, and I found that it was very interesting, and particularly it is related to the topic proposed by the TV Welfare STEAM organization. And this session generally is held, and the member, particularly the chairman of the e-session, is allowed to summarize what the conclusions based on the presentation is going to be held. So, Gwal Sahab, good afternoon. Gwal Sahab, hearing me? Yes, I am hearing. Are you hearing me, Tiwari ji? अरे भैया बनारसी हो करके बनारसी नहीं आ रहे हो, कैसे काम चलेगा? अब कम से कम जगदीश राय साहब की बात तो याद करना है। हमें बुलाया नहीं, हमें आपको देख के जलन हो रही है। अब ये अब तो घर पर बुलाया जाता है, घर के लोगों को तो नहीं बुलाया जाता है। चलिए, एनीवे आई विल रिक्वेस्ट यू, और ध्यान रखिए कि भविष्य में राय साहब भी हैं, हम भी हैं, सब लोग हैं। नहीं, बढ़िया है। दर्शन दे दिया करिए। तिवारी जी, मैं थोड़ा सा बोल लूं। मैं एक मीटिंग से बाहर आके 5 मिनट मिला है मुझे। चलिए ठीक है, तो ऐसा है कि I have attended mostly all the session, but it is very partly. But anyhow, I'm really very enjoyed by the content of the papers which are presented all the way, and I just appreciate the effort of Professor Rai and his colleagues and his friends, and I felt that he must give now the next conference he must be having face to face, and then I'll come to Banaras and I'll attend that. And I'm once again congratulating Professor Rai and his company, and I feel that I must be also joining that. I felt very highlighted that it is very good. The topic is very good. The topic is rather related to our Indian context, and which is must. I'm attending that meeting. It is on the autonomy of the education and other things. That is how I said that I'll just take 5 minutes and give it to you. And I'm really happy that I met my old friends, those who have given me a lot. Thank you very much, so much, Tiwari ji and Rai sahab. Thank you. Thank you, Gwal Sahab. And we hope that
we will meet you very soon in Banaras. At Whenever- Banaras, I'll certainly. Sahib is always in Banaras. Whenever you Ah. come, just tell me. I will Right. be there also. Right, Because right. I- Thank you very much. Just nearby Balia. Thank you so much. Thank you so much. Thank Okay. you very much to act as a chairman of this international conference. Thank you very much. All right. So now I will request the another chairman, Dr. Ashok Kumar Jain, and I think he is my classmate of 72 batch. And now, when I think Jain Sahib will be remembering our days in the MSc and this PhD. So after doing PhD, he joined IIT Roorkee. And now I will request that Dr. Jain should give his views on the session which he has chaired. Thank you, Dr. Jain sir. नमस्कार तिवारी जी। नमस्कार राय साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जैन साहब। और क्या गुरुजी कहाँ हो? हाँ, मैं तो हाँ, जैन वो- साहब आईटी दिल्ली रिटायर होने के बाद बलिया जिला होम टाउन में अपना स्कूल खोला हूँ, सोलर एनर्जी पार्क खोला हूँ और रिसर्च भी अच्छा। कर रहा हूँ, सब कुछ वहीं से कर रहा हूँ जो आईटी में करता था। अरे वाह, बलिया पहुंच गया। ओह, With your good wishes, still I am doing supervising PhD, writing research paper, writing book, and also I am teaching from class 1 to class 5th student. Math वेरी and नाइस, science. वेरी So गुड, that's वेरी what गुड। I am doing. देखिए इसी तरह से एक्टिव रहना चाहिए। Yeah, हम लोगों का काम ही यही है। यही है, टीचर का काम है ये टीचिंग करना। Thank you Yes. very much. Thank you, thank you. So, Professor Rai has given me this opportunity to chair a session, and I found that some very interesting thoughts were presented in this session. The important contributors to this session were Professor A.K. Gwal, who spoke about earthquake precursors and how in ancient India or ancient science, certain signatures of earthquake before the earthquake comes were identified and were used to predict earthquakes. Then Dr. Vishnu Chandra presented a very detailed talk, although time was not enough, about art of map making and how this is a very ancient science and map making has played a very important role in the human civilization. And what are the earliest you can say the maps, or well, in the early days what we got were not exactly maps, but they were the forebringers of the maps. They kind of led to development of the modern maps. So he traced that history, and that was a very interesting talk. Then Dr. Arvind Kumar Singh, he talked about ancient science and technology of Bharat. His slides were very beautiful, and he presented many interesting thoughts. And my view is that most of these things that are being talked about nowadays by many speakers in many places, they kind of repeat same thing. But next time when you hold the conference, you should give these specific topics to specific persons beforehand and tell them to bring authentic resources and references and then prove that this was so. That will, authenticate the claims that are being made, which is kind of missing so far. So it was a very interesting talk, and then Sanjeev Kumar Maurya talked about messages from past to present to future. Professor YDS Arya, he talked about fundamental scientific research in ancient India. And then Dr. Kamlesh Kumar Ligwe,
he talked about the advancement of mathematical and medical sciences. So, and there was one talk by Dr. Avdesh Kumar. I think it was shifted next day, probably. Ancient Indian Resilience New Innovations. So, most of the speakers, they stressed the existence of scientific thoughts and ideas in the early early Indian history. It is another thing that the Indian history is very scattered and not very authentic, very rigorously written anywhere. Indians were never good historians. And this has led to a lot of, confusion and lot of doubts in the minds because when history was being written by the English people and others, then they wrote it in their own way. And we didn't have those kind of people, historians who will bring out the real history. So there is always a conflict of opinion in many things. So there is certainly a need to kind of establish on the basis of evidences, on the basis of old scriptures, references, and there are a lot of scriptures and references. There is no doubt that in India, the things were written down by our scholars, our monks and rishis in huge volumes. Only thing is they have to be explored and they have to be kind of shifts. We have to go through them, sift through them, and then bring out the real picture. So many scholars are doing their job, but there is still a lot remains to be done. And this conference fulfills that demand, that need in many ways. And I hope that the next conference that Professor Rai will hold will become a kind of a torchbearer in terms of establishing new ideas or new paradigms in our ancient India. A history of India of which we will be proud of. So with these words, I thank again the team of Professor Rai and all the organizers for giving me this opportunity to talk about, give a lecture also, and I hope that there will be another opportunity to meet again. Thank you so much. Thank you, Professor Jain. And I hope that the committee will note of your suggestions. And particularly, authentication is the most important parameter of what we are saying in our lecture. So thank you very much. And our next chairman is Professor Ganesha Choube, and he has requested Professor Rai to summarize on his behalf. So now I will request that Professor Rai to summarize the session chaired by Professor Ganesha Choube. Thank you very much, Professor Tiwari. This session, chaired by Ganesha Choube, that consisted of 5 lectures, and most of them pertain to the ancient structure, science, technology, and architecture. The first talk was by Professor S.Y. Kulkarni. He spoke about ancient structures of the world, and not only in India, it was mostly in Europe and America also as well. So everywhere from India, from China, from Europe and for Americas, the old structures he has described. Jagdish Rai spoke about
the state of science and technology in ancient India, and he said that the ancient Indian science and technology was highly advanced. India was the first to give the Ayurveda, the method of medication, the medicines. Metallurgy of India was the most advanced. The swords made in India were very popular in Europe and in Arab countries. Ashoka pillar near Qutub Minar is 2,500 years old, and still it is not rusted, and still it is erect and well. Then he also spoke about the scientists of ancient India like Kalad, Aryabhatta, Sursuta, Charak, and others. Brigadier A.P. Singh spoke about the structure of temples in India, and his talk was very impressive. He is the person who tours India everywhere and take the photographs and structures of the ancient buildings, especially the temples in north and south. And then he has written many books, and books are very popular in India and abroad as well. Professor K.K. Singh, his talk was equally good. He talked about the ancient structures, and in India and abroad also, structures like Harappa, Mohenjo-daro, and others, and he described it very well. The last speaker on that day, Dr. Hina Fatima Ali, talked about the process of energy conservation in ancient buildings. Her most of the work is confined to Jama Masjid in Delhi, and she had also studied other ancient structures and given her views. So this was all about the session chaired by Professor Ganeshwar Chaudhary. Thank you, sir, very much. So now I request, because Professor Devi is not available on the line, so I will skip him. Now the next session is Professor Jagdish Rai. So I request him that he should summarize the paper presented by his group. Thank you, Professor. In this session, unfortunately, some of the people became ill and they could not attend the session. And the persons were Dr. Anand Shukla, Dr. Suryanarayan Gautam, Dr. Neeraj Rai, and Dr. Shreya. So the first talk by Professor Nagendra Rai of Indian Institute of Vegetable Research in Varanasi. He spoke at length about the ancient structure, ancient agriculture in the country, how it developed, how it started, starting from Ramayana era to about 4,500 BC, and then till now. He gave a complete description. He talked about the courses taught at the universities and colleges in agriculture in India, and there are several shortcomings. I think I will call him, we will discuss, and we 2 or 3 people will try to revive the courses of agriculture in different institutions of the country. Another talk was by Dr. Amit Joshi of Inverness University in Bareilly. He talked about the protein genomics and the viruses, and he had done a lot of work.
And I would like to give a few words of praise to the biotechnology at University. They are doing very well, and they have got funding from the Department of Science and Technology, from Council of Scientific and Research, and have done a lot of work. From that group, there are few people, they belong to the same external group, that of Amit Joshi, Neeraj Rai, and Mansa Raghavan. Mansa Raghavan gave yesterday a talk, and her talk was very impressive. The third talk was about the Earth-Sun atmosphere system and solar energy by Professor G.N. Tiwari. He talked at length about sun, how the energy is emitted from sun, how it is conveyed to earth, how the life was developed on earth deep in the ocean, and how it came up to the surface and how it progressed. What is the and sun, he said the sun is the source of all energy and life on earth. And we must harness the energy from sun, whatever is coming to the earth's surface. That way, it was very impressive, and here the young people will get certainly benefited from his talk. So before my session, there was a session by South African people. David Katerere was the chairman of the session. The session was so well organized. There were some 7 or 8 speakers from South Africa. To my opinion, that was the best session that we have seen here. And I thank Professor David Katerere and all the speakers of the session for their nice presentation. Thank you, sir, very much. Thank you, sir. And we have one more speaker, Dr. Arvind Kumar Singh, but I think he's not able to join this session. So moving further, thank you everyone for your cooperation and support throughout all the sessions. We present our wholehearted gratitude to all our chairpersons and speakers. And now I would like to invite the National Secretary and founder of DV Welfare Society, Mr. B. Batra sir, to present a brief thanks gift. Welcome, sir. Now this Professor Rastogi had requested Professor Jitendra Islam to summarize his session work presented by the every individual. So now I request Professor to summarize on behalf of Professor. Professor Rustagi, I talked in the morning, and he was very busy. Probably he was busy up to 1:30 to 2 p.m. 2 a.m. in the morning, and therefore he might not be able to come forward to the session. So on his behalf, I am summarizing. In this session, the first speaker was Professor Barnett Gaines from USA. She talked about the ancient salt industry in Africa, how the salt was collected, how in those days the salt was packed and distributed, and all the economic aspect of the same he described. The next talk was by Mansa Raghavan. She talked about
the application of biotechnology in history or other things. For example, once in a conference, I was advising that the application of biotechnology will be about the theory which I have read about a decade ago, that during the last ice age, people from Asia migrated to North America because the ocean between Russia and Alaska was completely frozen. For hunting, they walked into America and they spread throughout America, even in South America, and they are now known as Red Indian. And then to study the DNA profile of the Asian people and the Red Indian people in America. When I sat down after discussing, after telling about the things, she came to me, she said that she had done all the things. And then she told me that she has published 11 research papers in Nature on the same topic. So she is the person who is able to establish the theory that the Red Indians came from Asia. So while in USA working there, I collected many photos of the painting in those days about the Red Indians, their culture, the way of sitting, the way of working, the transportation was all similar to the Asian people, at least in India. So that also establishes that they are the Asians who have crossed to America and settled there, spread everywhere. They also have had the dogs with them, going here and there with their dog. Probably for their security, they had the dogs. So it was so nice. The talk given by Raghavan, I always appreciate Raghavan. Raghavan is a very busy person at the University of Chicago. On my personal request, Mansa Raghavan agreed to come forward and give the talk. Next person was Professor Alok Srivastav. Alok Srivastav is the assistant of Professor G.N. Tiwari, and he's settled in USA. He's working for some energy company. And Alok Srivastav talked about the physics, various parts of physics, the religion, and what the relation between these are. And his talk was very impressive, that he probably continues for 40 to 45 minutes giving the talk, and we all appreciate it very much. And then next was Professor Nisha Singh from USA. Nisha Singh described the region of the downfall of empires in ancient India. She said that there are certain extreme idealism of the Indian people. For example, the kings, they never attacked an enemy during night. However, the enemy coming from the west, from the Arab countries, they attacked during night time because they knew it, that they must be sleeping. Let us kill them. Second point was that in those days, it was the tradition that not to chase a soldier or army running away from the battlefield. And the Arab attackers knew it, that they will behave like that, and they did the opposite. While the running army or soldiers, they chased and killed them. And repercussion was that one by one, all the kingdoms fell
into the hands of the Arab attackers, and we became gulam, what you can say. That continued even in modern days, when after independence, we tried to be a peaceful country, a country full of ahimsa, of the principle of Gandhi, and then China attacked us. Then we were awakened and tried our best to improve our armament, and then we won the Civil War. Professor Narendra Rustagi himself, from USA, he talked about the reason why we should study, why we should go into the past, study history, the science and technology and civilization. Because if you know about your ancestors, how strong, how well they were, how intelligent they were, then you think, why not I should also be like that? You get some impetus to do some important good work. And because of that reason, though he talked at length, and then it was decided to hold this conference on ancient science, technology, and civilization. So in the beginning, myself and Mr. Birbhadra Singh, we decided to organize a conference on ancient Indian science, technology, and civilization. And it was a suggestion by Professor Narendra Rustagi that please drop the word Indian, and therefore it will be a global. Everybody will accept it, and it has so happened that people from USA, from Qatar, from South Africa, from Nigeria, and other countries, they have joined us. And so all the sessions were full of completely, and it has been appreciated by many people who have attended the conference. So with these words, I thank you, sir, very much. One more thing, we have decided to make it an annual feature. Next year, I mean after 1 year, we will have another conference, international conference, with the 3 organizations, Divi Welfare Society, STEM Institute, and International Educators Group. The exact topic and the dates we will announce later within about a month. So till then, say let us wait, and what the topic is given, what the dates are decided, and so on. So thank you all very much. Thank you very much. Now I request the participants if they want to make a suggestions for the future activity of these 3 organizations. Maybe in Hindi or English. हिंदी इंग्लिश there is no problem. हम लोग हिंदी देख के हैं, हम तो हिंदी में बोलना पसंद करते हैं, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है तो अंग्रेजी में बोल के थक गए हैं, इसलिए हम तो भोजपुरी में भी बोलना शुरू कर दिए हैं. Sorry to interrupt, sir, but now I'd like to invite our national founder of Divi Welfare Society, Mr. B. Badru, sir, to present a brief Thanksgiving. Welcome, sir. Thank you very much. Thank you, Rahul and Baisali, for inviting me. Well, firstly, I would like to thank you all for supporting us throughout this 3-day conference. Without your support, we would have not been able to successfully implement it. I present with special thanks to you, esteemed guests, to our esteemed guests, our speakers, our whole team, and our volunteers and our listeners. I hope we have done justice to the implementation of this conference.
I really hope that we were able to deliver our talk, our listeners. As a team, we believe in community development and sustainable development of this would have a whole. Our aim is reach every individual who are not able to afford education. Education is the most important weapon for the eradication of poverty and unawareness. After that, I would especially thanks to Professor Rai sir. He's our mentor of Divi Welfare Society. Professor G.M. Tiwari sir, our mentor of also our mentor of Divi Welfare Society. Narendra Dustagi sir, also he is our mentor. And Professor Pradeep Kumar Misra sir, he is the Vice Chancellor of AKTU and also mentor of the Divi Welfare Society. And our chief guest, Professor Bhagavati P. Sharma sir, and Professor G.N. Murthy sir, and after that, Professor A.K. Jain sir, who was on the screen. आपने सर पहले सेशन में बहुत ही सक्सेसफुली उसको एज ए चेयरपर्सन आपने होस्ट करा था, जिसकी वजह से हम लोगों को काफी ज्यादा सीखने को मिला और दूसरे थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी सेशन हुए या इंक्लूडिंग कंक्लूडिंग सेशन में उसी तरीके से हम लोग फॉलो करते रहे। और बहुत ज्यादा धन्यवाद साउथ अफ्रीकन पैनल को। उस पैनल ने हमें बहुत कुछ सिखाया। उस पैनल, चूंकि हम लोग सारे लोग अभी बच्चे ही हैं, ये हमारा पहला सेशन था, आप लोग इसमें दिग्गज हैं, लेकिन हम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला। और हम लोग को पता भी नहीं था कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है। कॉलेज में या कोचिंग में यहाँ वहाँ कभी हम लोग वेबिनार अटेंड कर लिया करते थे, कॉन्फ्रेंस तो बहुत दूर की बात है। इवन एनजीओ सेक्टर में कभी काल समिट हुआ करती थी, तो हम लोग बहुत डर की वजह से नहीं जाते थे कि समिट में क्या बोलेंगे, समिट में क्या प्रेजेंटेशन देंगे, कुछ पता ही नहीं था। लेकिन अब मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं और मेरी टीम अब किसी भी समिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वी कैन शो आवर प्रेजेंटेशन आल्सो, हम प्रेजेंटेशन भी वहां दिखा सकते हैं। इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्पेशली वैशाली और राहुल, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली राजस्थान से कनेक्टेड हैं और उन्होंने बहुत सक्सेसफुली सारी चीजें होस्ट करी, ऑर्गेनाइज करी। राहुल अनफॉर्चुनेटली आज यहाँ नहीं है, उनकी दादी का देहांत हो गया था, तो आज 13वीं है। उसके बाद भी कल तक यहाँ वह कॉन्फ्रेंस में रहे हैं और कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह से कंडक्ट करें। आज सुबह ही देवरिया के लिए निकले हैं। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और दिवी संस्था का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि दिवी संस्था ने हमारे ऊपर भरोसा करके, मेरे ऊपर पर्सनली भरोसा करके इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कराने के लिए जिम्मेदारी सौंपी। और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आने 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 वाले समय में इस तरह के और भी कॉन्फ्रेंस होते रहेंगे। क्योंकि राय सर अभी कह रहे थे कि ये हमारा एनुअली फीचर्स बनेगा, ये हर साल हम इस तरह के कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमने अभी 2 टॉपिक डिसाइड भी किया है, मैं भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। आफ्टर डिस्कशन राय सर और रुस्तगी सर के साथ बात जो है, वी विल डिस्क्लोज दिस टॉपिक्स। एंड एक रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे जैन सर भी हैं और भी इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो लोग जुड़े हैं, जो लोग कनेक्टेड हैं या जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, कि दिवी संस्था के कार्यों को आप लोगों ने इनॉग्रेशन में देखा और जाना कि हम लोग क्या काम करते हैं और हमारे जो बच्चे हैं, जो टीम है, जो स्टूडेंट हैं, वो सब किस तरीके से काम करते हैं। तो इन सब कामों को करने के लिए काफी रिसोर्स की जरूरत होती है। तो हम आपसे यह रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, आप लोगों से बहुत छोटा हूँ, तो हमारा हक भी बनता है। और मैंने कहा भी था कि मैं जिद करूंगा आप लोगों से, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग हमें रिसोर्स प्रोवाइड कराइए ताकि हम इस काम को और भी बेहतर कर सकें। अगले आने वाले जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस है हम इसको फिजिकली करा सकें, ताकि हमारा सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़े, सोसाइटी के लिए हम कुछ अलग से, कुछ इनोवेटिव तरीके से काम करें। संस्थाएं तो बहुत काम करती हैं भारत में, मैं बताऊं आपको, विश्व भर का तो डेटा मुझे नहीं पता, इवन इंडिया में 33 लाख एनजीओ हैं। 33 लाख, अगर एक एनजीओ 100 लोगों का भी जीवन परिवर्तन कर रही है तो मोस्टली लगभग 33 मिलियन लोगों को हम कवर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, 33 लाख में से कुछ ही एनजीओ काम करती हैं। और हम लोग भी शायद, मैं प्राउडली कह सकता हूं कि हम लोग भी उसी एक एनजीओ में से हैं। हम लोग ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं। आज हमारे सेंटर पे 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कोई भी विजिट करके देख सकता है कि वो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बच्चों का आउटपुट क्या है। हम केवल पढ़ाई के साथ साथ हम क्वालिटी पे भी ध्यान देते हैं। हमारे पास 10 ही बच्चे हों, लेकिन हम 10 बच्चों की क्वालिटी पे ध्यान देंगे कि वो बच्चा कुछ करे, वो बच्चा सीएचएस का एग्जाम क्वालिफाई करे, वो बच्चा नवोदय एग्जाम बीट करे, वो बच्चा बीएचयू जैसी संस्थाओं में पढ़ने आए, ताकि वह जीवन में आगे चल के कुछ कार्य भी कर सके। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि हम लोग फिर से एक बार इस मंच पर फिर आए
और अपनी बातों को साझा कर सकें और आप लोगों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, ये हमारे लिए सर बहुत सौभाग्य की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, प्रणाम। जो कुछ भी कहना है वीरभद्र ने कह दिया। यदि दो व्यक्तियों को मैं व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद न दूं तो ठीक नहीं होगा, अनुचित होगा। प्रथम व्यक्ति हैं मेरी पत्नी श्रीमती किरण राय। मैं जब भी कभी आलस करता हूं किसी काम के लिए तो मुझे उकसाती हैं कि नहीं तुम जाओ, मुझे प्रेरित करती हैं काम करने के लिए। और शायद उनकी वजह से मैं कुछ जो भी कर पाता हूं उनकी वजह से कर पाता हूं, क्योंकि मेरे पीछे एक फोर्स रहता है ढकेलने के लिए। और दूसरे मेरे सामने बैठे हैं दिलीप कुमार सिंह, ही द मैनेजर ऑफ माय ऑफिस। और कोई भी काम हो सारे टाइप करना, लोगों को भेजना, सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये वो करते रहते हैं। तो मेरे व्यक्तिगत धन्यवाद के पात्र हैं ये दो लोग। सो जन साहब, थैंक यू वेरी मच। So I declare, Jan Saab, you want to say something? Do you want? मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं Thank you. और आपकी टीम के सभी सदस्यों को, वीरभद्र को और दूसरे आपके जो यूएसए में सहयोगी हैं, और आपके और हमारे मित्र गोपाल नाथ जी हैं, और इस प्रकार के सभी जो आपने इतना बढ़िया संयोजन किया है, लोगों को जुटाया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। Thank you. Thank you. ये बहुत छोटा काम नहीं है। और हमें पता लग गया कि इसके पीछे जो फोर्स लगता है वो कहाँ से आ रहा है, उसका स्रोत क्या है। तो वो भी बधाई के पात्र हैं। तो हमें उम्मीद है कि वो फोर्स जो आपके पीछे लगता रहेगा और हम बिल्कुल। आप काम करते रहेंगे। लगा रहेगा। अभी हमारे साथ जुड़ी हैं हीमा फातिमा अली। अच्छा, Hima, would you like to say something? Hima is in Qatar and she gave the talk from Qatar. जी सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके और बहुत कुछ सीख के। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ऐसे ही हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे और मैं कुछ भी अगर यहाँ पे योगदान कर पाऊँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। Okay, thank you, Hina. So I think things are over. So now I declare the session to be over, the conference to be over. Thank you very much. Well, with this, we would like to conclude the Street International Conference on Ancient Science, Technology and Civilization, which is jointly organized by DV Welfare Society, STEM Institute India, and International Educators Group, Washington, US. वैशाली, just a whole minute. Can I say something? जैन सर, हमारी टीम के वॉलंटियर्स हैं, दे बिलोंग्स फ्रॉम MSW डिपार्टमेंट BHU। उन्होंने कुछ कविताएं लिखी हैं, दो स्टूडेंट हैं, एक है अनिष्का और एक है संजय। तो आप लोगों को कुछ सुनाना चाहते हैं, तो आई वुड लाइक टू। सबसे पहले मैं आप सभी लोग को प्रणाम करता हूँ। और मेरी यह कविता मैं तब लिखा था जब मैं डीवी के साथ फील्ड वर्क पे गया था। वहाँ पे जो बच्चे मिले और वहाँ पे जो लोग मिले, उनकी तकलीफें और उनको देख के मुझे कुछ ऐसा अंदर से फील हुआ और मैंने उसको शब्दों में उतारने की कोशिश की है। इस कविता का शीर्षक है कि चलिए एक नई शुरुआत करते हैं।
कोई भूखा सोया है, किसी के सर पे छत नहीं। इनकी रोटियों से मत खेलो, हमको इसका हक नहीं। हमारी वाह को इनकी आह जन्म देती है। बस करो अब मत खाओ, ये इनके हिस्से की रोटी है। इनकी जिंदगियों में कुछ सुधार करते हैं, चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। हमारे अपने दर्द हैं, हमारी अपनी मजबूरियां हैं। कहने को जो पास है, उन रिश्तों में भी दूरियां हैं। हम तेजी से भाग रहे हैं, लगता है कहीं जाना है। सोती रातों में जाग रहे हैं, लगता है कुछ पाना है। तनिक रुके जरा सोच तो लें, क्या पाना क्या खोना है। जिंदगी कुछ और नहीं, कभी हंसना कभी रोना है। भूल कर सब कुछ बस अपनों से प्यार करते हैं, चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। परिंदों को पिंजड़ों में रखकर हम उनसे प्यार करते हैं। वक्त पर दाना पानी देकर जैसे उपकार करते हैं। तोड़कर बंदिशें दुनिया की, जीवन की शुरुआत करते हैं। पिंजड़े में जो बंद परिंदे हैं, फिर से उन्हें आजाद करते हैं, चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। कुछ सपने नए बुनते हैं, कुछ सपनों को साकार करते हैं। पंछी बनकर उड़ जाते हैं, उन्मुक्त गगन से प्यार करते हैं। जो लम्हे पीछे छूट गए, उन लम्हों का एहसास करते हैं। एक अरसे से जिनसे नहीं मिले, आज उनसे मुलाकात करते हैं, चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। और ये जो आखिरी पैराग्राफ है, ये डेडिकेटेड है सोशल, एज ए सोशल वर्क मैं डेडिकेट करता हूँ आप सभी लोग को, कि कुछ मायूस चेहरों को मुस्कान बांटते हैं, कुछ नन्हे परों को आसमान बांटते हैं, कुछ टूटे हौसलों को उम्मीद, कुछ जागती आंखों को नींद बांटते हैं। कुछ खाली हाथों को काम, कुछ बेनाम चेहरों को नाम, कुछ भटकती जिंदगियों को सहारा, कुछ डूबती नावों को किनारा। खुली आंखों को पेट की आग को रोटी, खुली आंखों को ख्वाब बांटते हैं। थामते हैं उन हाथों को जिनके कोई साथ नहीं, सींचते हैं उन जिंदगियों को जिनके हिस्से में कोई बरसात नहीं। ढकते हैं कुछ नंगे बदन, कुछ थके पैरों को आराम देते हैं। अपने लिए क्या जीना, जिंदगी औरों के नाम करते हैं, चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम लोगों में एक बच्ची है, वो भी मास्टर ऑफ सोशल वर्क की स्टूडेंट है। वो कविता लिखती हैं, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत शर्माती हैं, लेकिन बहुत अच्छा आज आ रही हैं सुनाने के लिए। प्लीज आ जाओ। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सिर्फ 2-3 लाइन बोलूंगी। मैंने ये अपने लिए लिखा था, मतलब मेरे खुद का परिचय है कुछ लाइंस में। मेरा परिचय तृण मात्र सा है, मैं पुष्प नहीं हूँ उपवन का। मेरा परिचय तृण मात्र सा है, मैं पुष्प नहीं हूँ उपवन का। मेरा परिचय कण मात्र सा है, मैं मेघ नहीं हूँ सावन का। ए हृदय मेरे अचकित रहना, तुम प्रेम मधु के योग्य नहीं। तुम तप्त धूप की रेत हो, तुम बंध विषय के योग्य नहीं। थैंक यू। अपना नाम बताइए, इनका नाम बताइए। सर मेरा नाम अनिष्का है, मैं MSW की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर BHU से। वेरी नाइस, बहुत अच्छी कविता। थैंक यू सर। साहब, आपने हमारे कविता सम्मेलनों की याद दिला दी। हाँ, मैं भी यही कहने जा रहा था कि हम लोग रुड़की में थे, मैं प्रोफेसर AK जैन, एक तीसरे पर्सन थे यादवंत पांडे। तो हम लोग कभी गोष्ठी किया करते थे, अपनी अपनी कविताएं सुनाते थे। सर आपको कोई कविता याद है अपनी, तो सुनाइए। नहीं याद? कविताओं से बहुत दूर आ गया। कविताओं से इतना दूर आ गया, अब याद ही नहीं है कि कविता भी लिखते थे। मैं अभी इन लोगों को फोन में बताया था एज ए गपशप में। मेरी एक कविता है, मैंने करीब 1-1.5 साल पहले लिखा था। कविता है, हम प्यार तुम्हें करते हैं ऐसे, मछली करती जल से, जल करता सागर से, सागर दूर क्षितिज से। हम प्यार तुम्हें करते हैं ऐसे, मछली करती जल से, जल करता सागर से।
सागर दूध जैसे। पराबैंगनी किरणें जैसे खुद को विलीन कर ओजोन बना जीवन देती अपना जीवन खोकर। सूरज की गर्मी से तपकर तरु जैसे देता छाया, अपना संचित फल देकर जरा न रखता माया। उसके बाद मुझे लाइनें याद नहीं है। उसका तात्पर्य यह है कि बादल पानी बरसा करके खुद विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। नदियां जाकर के पानी दे करके खेतों को सींचती हैं, अनाज पैदा करती हैं, उनका जो जल प्राण है वो खत्म हो जाता है। और ऐसे ही हम तुमको इस तरह से प्यार करें कि तुम में प्रकाश फैला करके खुद विलीन हो जाए। तो ये है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह भाई साहब। पर ये बहुत बड़ी बात है कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में उसको पेपर पे उतारना, ये भी बहुत बड़ा काम है। थैंक यू। थैंक यू। और कोई है जो कविता सुना सके यहाँ पर? मोहुल, यू आर आल्सो ए पोएट, कम ऑन। नहीं, एकदम नहीं। हाँ हाँ, सुनो सुनो। आओ। मेरा नाम मोहुल है। बहुत छोटी सी स्टोरी है, लेकिन काफी इंस्पायर हुए थे हम इस स्टोरी से। बहुत रिसेंट में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मेरे हॉस्टल में एक मेड आती थी काम करने को। उनकी सिस्टर थी, उनकी सिस्टर की एक बच्ची आई एक दिन, तो मैं उसे ड्राइंग सिखा रही थी। फिर बातें हुई हमारी, उस बच्ची से मैंने बहुत बातें करी। वो बहुत तेज थी। मैं उससे पूछी कि तुम्हें बड़े होके क्या बनना है, तो उसने एक वर्ड में मुझे आंसर दिया कि लड़का। हाँ, तो मैं शॉक्ड हो गई। मैं पूछी कि क्यों, तो बोली मैं लड़का बन जाऊंगी तो मुझे बड़े स्कूल में पढ़ने मिलेगा, मुझे कोई मारेगा नहीं और मुझे मिठाई खाने को मिलेगा। सर मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, बहुत ज्यादा। अब वो मुझे बहुत मोटिवेट किया इसके आगे काम करने के लिए, बहुत ज्यादा। थैंक यू सर। Anyone else? वीरभद्र, आप कुछ कहेंगे, कुछ सुनाएंगे? सर कहानी से याद आया। 2018 में जब हम लोगों ने मेरा ये प्लान था कि कुछ अच्छा करते हैं, कुछ थोड़ा सा लाइफ में कुछ पुश करते हैं अपने आप को। क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन कॉमर्स से था, तो कई लोगों ने सजेस्ट किया कि आप CS कर लीजिए, CA कर लीजिए। क्योंकि बीकॉम के बाद एक्चुअली क्या होता है ना कि 12th के बाद जो कोर्स डिसाइडेड होते हैं वो आपके लाइफ को पूरी तरह से बदलते हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस माना जाता है इंजीनियर बनेंगे, लेकिन बाद में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ कि इंजीनियर के बाद MBA करने लगे लोग। तो कॉमर्स में क्या था कि लोग किसी से पूछे तो कहेगा कि आप CA बनेंगे, CS बनेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन हमारे साथ थोड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि MBA की फीस भी बहुत ज्यादा होती है कैट के लिए। और आप, मुझे लगता है कि कुछ रेयरर बच्चे होते हैं जो बिना कोचिंग इंस्टीट्यूशन के तैयारी करके 99 परसेंटाइल ले आते हैं। लेकिन आज का जो सिनारियो है, 99% लाने के लिए मुझे लगता है कोचिंग बड़ा जरूरी हो जाता है। तो कैट मेरे साथ तो था, मैं दूसरे बच्चों का नहीं जानता था, मेरे साथ तो था कि कोचिंग करनी पड़ती। तो कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, और मान लीजिए कोचिंग के लिए पैसे कर भी लेते तो MBA करने के लिए पैसे नहीं थे। और नॉर्मल कॉलेज से MBA करना वो मेरे लिए थोड़ा सा वो सही नहीं था कि किसी प्राइवेट कॉलेज से MBA करके फिर जॉब करो, फिर उसी तरह लाइफ हिस्ट्री दिखती रहे। तो हमने डिसाइड किया था कि हम लोग कोचिंग खोलेंगे। मैं और एक मेरे मित्र ने डिसाइड किया कि कोचिंग खोलेंगे। कोचिंग से जो पैसा आएगा उससे थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके और PG कर लेंगे, BHU से रूरल डेवलपमेंट का कोई कोर्स कर लेंगे। वो भी MBA का एक समझ लीजिए छोटा भाई ही होता है। तो कोर्स उसी तरह से स्पेशलाइज बनाया गया, प्रोफेशनल कोर्स, जैसे MSW आप लोगों का है। MSW भी जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। अल्टीमेट सोशल वर्क के साथ साथ आप लोग को तो जॉब चाहिए ही, तभी तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। या तो अपना कुछ स्टार्टअप करिए, NGO खोलिए, ऐसे कुछ करिए। लेकिन पैसा लाइफ में जरूरी है। बिना पैसे के, अब एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो कॉन्फ्रेंस के पीछे कहीं ना कहीं सर ने कहा ना कि रिसोर्स लगा है।
तो उस रिसोर्स को जुटाना पड़ेगा ना। तो जब हम लोग ट्यूशन कोचिंग पढ़ाते थे तो जैसे हमारे मित्र विनीत जी जो थे वो बोलते थे कि सब लोग पैसा जमा करो, फीस जमा करो। तो कई बच्चे कभी कभार फीस नहीं जमा करते थे, क्योंकि 2-3 टीचर भी पढ़ाते थे तो थोड़ी सी दिक्कत भी होती थी। तो 1-2-3 बच्चे हमारे पास आकर बोले कि सर हम लोग थोड़ा सा फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सर से बोल देते, विनीत सर से बोल देते थे कि कुछ दिन रुक जाते। लेकिन 10 दिन 15 दिन रुकने के बाद भी बच्चे फीस नहीं जमा करते थे। अब थोड़ी सी हम लोग को भी दिक्कत होने लगती थी कि रूम का रेंट जमा करना, बिजली का सब, इलेक्ट्रिसिटी का सब जमा करना, दिक्कत होती थी। तो एक दिन हम बच्चों को बैठाए तो कई सारे बच्चों ने कहा कि सर हम लोग किस तरह पढ़ते हैं और कितनी मेहनत करके हमारे मम्मी पापा जो है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई घरों में काम करता है, कोई लेबर है, इस तरह के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग 50% फीस उनकी ऑफ कर देंगे ताकि वो बच्चे थोड़ी बहुत फीस जमा कर सकें। लेकिन 50% फीस ऑफ करने के बाद भी वो बच्चे फीस नहीं जमा कर पाते थे। मतलब हमारे आपके लिए हो सकता है 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए बड़ी बात है, छोटी बात है, लेकिन उनके लिए सर बहुत बड़ी बात है। आप उनसे कह दीजिए कि 200 रुपए फीस जमा कर दीजिए तो वो 200 रुपए नहीं जमा कर पाते थे। बड़ा ताज्जुब होता था कि बताइए हम हाई ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? आज दुनिया में वही ताकतवर हो सकता है जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, वही दुनिया का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो उसी तरीके से बड़ा कष्ट होता था कि देखिए बच्चों के पास 100 रुपए 200 रुपए नहीं है। वहीं से एक तरफ से देखा जाए तो वहीं से दिव्य का जन्म हुआ था। हमने डिसाइड किया था कि हम 2 बैच बनाएंगे, एक बैच पेड बैच होगा और एक बैच अनपेड होगा। और हम पूरी कोशिश के साथ उन बच्चों को पढ़ाते थे और बच्चों का बड़ा अच्छा रिजल्ट भी आया। उनके जो फादर और जो भी लोग सुनते थे बड़ा अप्रिशिएट भी करते थे कि आप लोग बड़ा अच्छा काम करते थे, बड़ा अच्छा करते हैं। तो जैसे हम लोग को कहीं ना कहीं से पुश मिला। 2010 में जब हम आजमगढ़ से बनारस मूव किए तो हमको भी सतुआ बाबा आश्रम ने पुश किया था। सतुआ बाबा महाराज जी जो थे, हमारे पिताजी चूंकि बहुत लेबर का काम करते थे, तो हम लोग की भी इकोनॉमिकली सिचुएशन वैसी नहीं थी कि हम चारों भाइयों बहनों को बनारस में पढ़ा सके। 7,000 रुपए की नौकरी में बनारस में रहना खाना ही बहुत कठिन काम है, ऊपर से बीएनएस इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना ये कैसे पॉसिबल था। लेकिन ईश्वर है, माँ सरस्वती की कृपा रही कि मेरे फादर तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने शिक्षा का महत्व समझा। और यही कारण है कि हम लोग केवल शिक्षा के लिए काम करते हैं, क्योंकि शिक्षा ही वह एक मोटिवेशन है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को पढ़ा लिखा देंगे तो हमें सेल्फ सस्टेन हो जाएगा। मेरे फादर ने ही या जितने भी सपोर्टर थे, अगर हम भाइयों बहनों को पढ़ाया तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट कुछ बच्चों पे तो दिख ही रहा है, उसका इफेक्ट दिख रहा है सोसाइटी पर। तो मुझे लगता है कि शिक्षा से बेहतर, शिक्षा से ज्यादा पावरफुल कोई वेपन नहीं। इट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा बहुत शक्तिशाली। कलाम साहब भी यही कहते थे कि शिक्षा से पावरफुल कुछ नहीं है। तो आज लगभग 4 वर्ष बाद इस तरह के प्लेटफॉर्म पर अगर हम कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे मेरे मम्मी का या मेरे पिताजी का बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। और जब आप बहुत कुछ अच्छा काम करते भी हैं तो आपको लोग बड़ा इंकरेज भी करते हैं। लेकिन आपको, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि एकला चलो, अगर आपका कोई साथ नहीं दे रहा है आप बस चलिए, आप चलिए और देखिए राह बनती जाएगी, रास्ता बनता जाएगा। कांटे मिलेंगे, कुछ समस्याएं भी आएंगी, लेकिन लाइफ का पार्ट होता है सर। आप लोग भी अगर आज इतने ऊंचे पद पर बैठे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग कभी इस तरह की कठिनाइयां या संघर्ष नहीं देखे होंगे। क्योंकि कल तिवारी सर, राय सर बता रहे थे, इन्हीं सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मिलती है। इनका कष्ट देख के तो मुझे लगा तो मेरा कुछ भी कष्ट नहीं था। इन्होंने कहा, तिवारी सर बता रहे थे कि मेरी शादी हो गई थी, कभी कभी मेरी स्कॉलरशिप रुक जाती थी और पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि हम लोग बैचलर्स हैं, बैचलर्स होने का एक बड़ा फायदा है कि केवल हमको अपने आप को देखना है, हम ही लोगों को पढ़ना लिखना है। और माँ बाप का सपोर्ट तो हमेशा मिलता रहता है। हम चाहे कितने पैसे वाले हो जाएं, चाहे कितने भी सस्टेन हो जाए, माँ बाप एकदम मतलब अंत तक हमको सपोर्ट करते रहते हैं। तो माँ बाप का बर्डन बच्चों पर नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। लेकिन बीबी का, पत्नी का और बच्चों का बर्डन आप पर रहता है, क्योंकि वो आपके भरोसे हैं, उनकी डिपेंडेंसी आप पर है। तो कहीं ना कहीं हम खुशकिस्मत हैं कि मेरे माँ बाप हैं। हम कहीं अगर कष्ट में रहते हैं, कहीं दुख में रहते हैं, तो मेरे माता पिता सपोर्ट करते हैं। तो संघर्ष ही आदमी को सर महान बनाता है। और उसी संघर्ष के साथ हम लोग सर आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों से कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरों जो हम लोगों के जो
स्टूडेंट है उनको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो आप लोगों से लेते हैं वो गिव एंड टेक वाला रूल है, जो आप लोगों से लेते हैं उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, और इसीलिए किसी चीज की कमी भी नहीं होती है, क्योंकि हम अपने पास रखते नहीं हैं। ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हम एमएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट की टीम को देना चाहते हैं। आप लोगों से अटैचमेंट मेरा 1-2 महीने पहले ही हुआ, और आप लोग हमारे ऊपर भरोसा करके हमारे जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, या सर एक चीज और भी बताना चाहूंगा मैं जैन सर, चूंकि सबको पता है, आप शायद कनेक्ट नहीं रह पाए थे हमारी एक्टिविटी से। एक जालूपुर जगह है फातिमा मैम, बनारस के आशापुर के लगभग 10 किलोमीटर दूर वह जगह है, जहाँ पे प्रदीप सर का जन्म भी हुआ था। और प्रदीप सर ने वहाँ पे वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए पूरा प्रॉपर एक कंस्ट्रक्शन बना के दिया है कि आप लोग वहाँ बच्चों को पढ़ाइए, और जो भी रिसोर्स था उसको अवेलेबल कराया है ताकि आप बच्चों को पढ़ाइए। और उसमें सबसे ज्यादा मेहनत इस टीम ने की, एमएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट की टीम ने, क्योंकि इन बच्चों का फील्ड वर्क है। तो फील्ड वर्क का मतलब ये नहीं होता है कि आप बनारस शहर से 30 किलोमीटर दूर भेज दीजिए, आप उनको शहर में भी कुछ सिखा सकते हैं, काम करा सकते हैं। लेकिन इन बच्चों ने कहा नहीं सर, आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किया हम उसको कंप्लीट करेंगे, और गांव गांव जाके, घर घर जाके, उनके पेरेंट्स से बातचीत करके, उनको अवेयर करके कि पढ़ाई का क्या महत्व होता है। क्योंकि सोसाइटी में 1-2 बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने पीएचडी, जो अभी फिलहाल पीएचडी कर रहे हैं, उनका एग्जाम्पल देखे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एग्जाम्पल देखे। एक एससी कम्युनिटी से निकला हुआ व्यक्ति भारत के संविधान, भारत के भविष्य को बदल कर रख दिया है। क्योंकि संविधान बनाने में बहुत लोगों का हाथ था, लेकिन एक नेता होता है, भीमराव अम्बेडकर को ही वह काम सौंपा गया था। तो एक निचली जाति से, एससी कम्युनिटी से निकलकर जो भारत का एक व्यक्ति जो भारत की तकदीर बदल सकता है, उसी तरह इसमें से हो सकता है कोई व्यक्ति भारत की तकदीर किसी और काम के लिए, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए, किसी और भी चीजों के लिए काम कर सकता है। यह बच्चे हमारा पूरा सपोर्ट किए, और जालूपुर जाकर उस प्रोजेक्ट को शुरू करवाने में पूरी मदद किए, और प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल भी हो गया। आज वह 150 बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। ये लोग प्रॉपर जो है बृहस्पतिवार को, मंगलवार को जाते हैं, प्रॉपर मॉनिटर करते हैं फोन से, मतलब चीजें एज इट इज अब थोड़ी सी चलने लगी हैं। उसके बाद फिर एक कॉन्फ्रेंस राय सर की मदद से हुआ। और एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि एक कॉन्फ्रेंस जहाँ हो रहा है, जैन सर आप तो जान ही रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस जहाँ हो रहा है बर्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। बर्स कॉम्प्लेक्स जीएन तिवारी सर की सोसाइटी है, हो सकता राय सर भी उसके ये सब लोगों की ही संस्था है। तो यहाँ का मैनेजमेंट रूम जो है रखा गया था कि कोई गेस्ट आए या कभी कोई आ जाए तो उसके लिए था। लेकिन हमने कहा कि सर मैनेजमेंट रूम में अगर कॉन्फ्रेंस होता है तो थोड़ा सा सहूलियत रहेगी, अच्छा रहेगा, सब कुछ इजी रहेगा। बिना सोचे, एक भी पल बिना सोचे तिवारी सर ने कहा कि ठीक है कराओ, तुम लोग का मन है तो मैनेजमेंट रूम में ही कराओ, कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल में ही कराया जाए, यहाँ कराए। जबकि रूम में तिवारी सर रुके हैं, थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ से आने जाने में, लेकिन उनको कोई हिचक नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बनाए तिवारी साहब ना जी कहाँ पर है तिवारी जी? बैठे हैं सर। नहीं, तिवारी जी ने ये कहाँ पर बनाया है सब ये? महामना नगर कॉलोनी। बहुत सुंदर। मैं तो बनारस आता ही रहता हूँ, मिलेंगे। मैं तो आता ही रहता हूँ, मैं तो हर महीने आता हूँ। हाँ, अभी आपके यहाँ पर 3 घर हैं, एक तो बर्स कॉम्प्लेक्स, एक मेरा अपना पर्सनल मकान, और दूसरा है आपका अपना इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच। अभी हमारे बीच में प्रोफेसर राय सर की धर्मपत्नी किरण मैम आई हुई हैं, थोड़ा सा शक्ति पुंज आ गया है। जी जी जी। आइए मैं इनको जी 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 कंटिन्यू। देखिए, आपको कुछ बोलना पड़ेगा आज। आप आगे आइए, देखिए राय साहब का शक्ति पुंज तो आप ही है।
नमस्कार भाई साहब, नमस्कार सबको, आशीर्वाद सभी बच्चों को। ये 3 दिन का प्रोग्राम मेरे हस्बैंड पूरी तरह से डेडिकेटेड रहे इसको, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ आप सबकी सहायता से। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, आप सभी का सहयोग मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आप ताकत देते रहिए। नहीं, मेरी तरफ से तो पूरी पूरी हेल्प है। थैंक यू। थैंक यू। राय सर से ज्यादा धन्यवाद मैं मैम को इसलिए देना चाहूंगा कि हमेशा जब भी हम लोगों से मिलती हैं तो हमेशा डांटती रहती हैं कि देखो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा विशेष ख्याल दिया करो, ठीक है, टाइम गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईआईटी का कल्चर रहा है। ये सब चीजें थोड़ा हम लोगों में माइनस पॉइंट रही हैं, क्योंकि आईआईटी का कल्चर रहा है या बड़े संस्थानों का कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे हम लोग कभी 6 बजे का प्रोग्राम रखे तो 6:30 बज जाता था, 6:45 बज जाता था। तो जब से मैम स्ट्रिक्ट हुई हैं, कार्यक्रम देखिए 3 बजे होना है तो 2:45 पे ही जूम लॉगिन करके सारा सब कुछ तैयार। मतलब टाइम से भी पहले। ठीक है सर, खत्म करें। ओके सर, ठीक है। हिना मैम कुछ बोलना चाहेंगे? जी मैं कुछ अगर अलाउ करें तो मैं हाँ, कुछ श्योर। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था मैंने सेशन में, तो मैंने देखा नहीं कि मेरे गुरुजी तिवारी सर वहां पे हैं। नमस्ते सर। सर आज मैं जहाँ पे हूँ वो आपका बहुत बड़ा योगदान है उसमें। मैं अपनी पूरी फैमिली में पहली लड़की हूँ जो साइंस साइड से पढ़ी और आज डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी की डिग्री मिली है मुझे। तो इसमें तिवारी सर का गाइडेंस और उनके सपोर्ट की बहुत बड़ी उनका हाथ है। आपके लिए शायद मैं बहुत छात्रों में एक छात्रा थी, लेकिन जो आप मेरी जिंदगी में बदलाव लाए हैं, शायद पता नहीं आपको अंदाजा है कि नहीं कि मेरी जिंदगी बहुत बदल गई है उससे। तो धन्यवाद सर, और आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे हमारे सरों पे, ये आपसे गुजारिश है सर। So nice, thank you, very nice. शिक्षक का काम ही है जिंदगी बदलना। Then sahab, Professor Rai was the Indian examiner of PhD thesis of Hina. Yeah, he told this. I heard her talk. Very nice talk. And she's an architect. Yes. So fortunately, being a physicist, I have supervised all the engineering students, electrical, mechanical, civil, architect, physics, chemistry, math, biology even. So I have supervised because solar energy utilizes in every part of the life. So I have taken the advantage of that and supervised by applying the heat and mass transfer theory, which we never studied in our time. So we have learned quite a lot from Professor M. Sodha, because he was also physicist. So he has guided us at the beginning, and which I am utilizing, still I am utilizing further. Thank you very much. Nice. Very nice. So I think all the deliberations are over. Yes. So let us finish it. Of course, the practice was already over a few minutes earlier. Thank you so much. Yes, we will meet again. Yeah, maybe there will be physical presence in the next conference. Next. So national anthem, please stand up. All of them. Yes. चलिए शुरू कीजिए।
तव शुभयाशिष Okay, goodbye. सत्यमेव 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 असली सार है लाइफ का सत्यमेव जो जयते। सत्य बोलता है वो कभी हारता नहीं। थैंक यू वेरी मच। Close it.